Hi, good morning, everyone, and a very warm welcome to this particular session. We are talking about launching a selection badge for interview preparation, personal interviews. And when we were launching this, everybody came back and said कि इतनी जल्दी क्या है इस बैच को बताने की या पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करने की। स्टूडेंट्स ने बोला, सबने बोला कि भाई ये तो जब रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हमें ये बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये बात समझें कि आपको पता है कि 1 out of 3 स्टूडेंट्स ओनली गेट सिलेक्टेड इन अ गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं पिछले 25 साल से करीब 50,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूं, चाहे बैंक एग्जाम्स के इंटरव्यू के लिए, चाहे एमबीए एंट्रेंस इंटरव्यू के लिए, आईएएस इंटरव्यू के लिए, चाहे इंटरनेशनल एग्जाम्स के इंटरव्यू के लिए। और बार बार मुझे रियलाइज होता है कि जो बच्चे बिल्कुल लास्ट मिनट पे प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं उनकी प्रिपरेशन अधूरी रहती है और वो सक्सेसफुली नहीं हो पाते। और उस समय आपको यू सडनली फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसगस्टेड बिकॉज यू रियलाइज दैट अ वेरी कैपेबल पर्सन has not been able to do a good job because they did not prepare. उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन उन्हें पहले से करनी चाहिए थी और पहले से तैयारी करके आनी चाहिए थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सबको जरूरी है। It is actually a discipline. In fact, I tell everybody that interview preparation is not only an art but it is a science too, which means that if you very selectively, very smartly go through the entire process of preparation, there is no reason you will not be able to crack that. So that is what we are going to talk about in this successful batch for person interview. और आज कुछ हम बातें आपसे बात करेंगे कि सबसे पहले हम कुछ इंटरव्यू मिथ्स की बातें करते हैं। तो इंटरव्यू मिथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट से बात करें तो वो आके आपको कहते हैं कि सर इंटरव्यू इज प्योरली लक, कि उस दिन अच्छा सवाल आया तो आई वुड बी एबल टू आंसर दैट, एंड इफ माय क्वेश्चन व्हिच दे पोज टू मी इज नॉट गुड आई वुड नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट। मेरा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये तो लक का फैक्टर है। बहुत सालों के तजुर्बे के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली दैट इंटरव्यू इज 99% प्रिपरेशन। बहुत सारे students are driven by an interview. I mean, they've come back and say कि interview is like an interrogation. Actually, it is not an interrogation. If you are in control of your thought process, if you are prepared well, you would be able to drive that interview very comfortably instead of being driven by them. I mean, हम interrogation के लिए नहीं जा रहे हैं. It is not a CBI interrogation or a police interrogation. It is we are trying to have a conversation with the people who are there. So if you get into a mode of conversing with the panel, I am sure that you would get selected, and we would talk about that in detail. In fact, some people come back and say, "Oh, they have already decided whom to select." Then why should an interview? Then sit at home. मत जाइए इंटरव्यू के लिए यदि आपको ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू के बारे में पहले से ही सोच चुके हैं। Let me tell you by experience. In fact, I was a vice president with ICICI Lombard बैंक, ICICI बैंक के आर्म में भी, और मैं हर साल बहुत लोगों का इंटरव्यू लेता था। आज भी मैं बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में बैठता हूँ, आई ट्रेन एंड आई लुक एट पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, एंड आई रियलाइज दैट about what kind of a person you are going to select. You have ideas about what would suit my DNA, मेरी organization के roles and responsibilities के साथ। I need an extrovert kind of a person. I need a person who is diligent, or probably I need this kind of a personality or this kind of a personality. I would decide on that. But yes, why am I trying to interview you? Is because I am looking at a job fit. I am saying that this is my requirement. If you fit into my job profile, I'll select you. But I am evaluating you. From the moment you walk into an interview room, my antennas are up and I am trying to judge you, I am trying to evaluate you. So if you're prepared well and you bounce off the right ingredients or the right tips or the right clues to me, I would select you. I mean, you know what, when the interview gets over, interview panel के जितने लोग हैं वो आपस में क्या डिस्कस करते हैं? अच्छा, वो बच्चा आंसर नहीं कर पाया लेकिन ना डिलीजेंट है, सिंसियर है, नर्वस हो गया, कोई बात नहीं, we'll still give it to him. So that's the way it is. So you have to prepare. Some people come back and say, oh, मेरे को 2-3 क्वेश्चन ही पूछे और I am rejected. Please understand, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में आप जब घुसे उस टाइम पे, इनफैक्ट when I take interviews of people, I am able to
give a very ballpark picture about that personality, and I would only reinforce that while taking an interview. तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं ये reinforce कर रहा हूं, हाँ सुटेबल है नहीं है, सुटेबल है नहीं है, सुटेबल है नहीं है। तो यदि आप इस हिसाब से चलते हैं कि 2-3 क्वेश्चन में आपका रिजेक्शन हो गया तो ये जायज नहीं है, तो खाली 2-3 क्वेश्चंस की तैयारी करूंगा नहीं है, बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको करना पड़ेगा, आप तभी क्रैक कर पाएंगे। And a lot of people come back and say, I will prepare only once my results are out, and that is where you go wrong. हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो क्या हम मेंस के सब्जेक्ट्स बहुत पहले से नहीं सोचते? इंटरव्यू भी क्रैक करना एक प्रोसेस है, आपको समझना। फॉर एन एग्जांपल, a lot of people ask you questions about your true self, they ask you something like describe yourself, उसमें वो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग स्किल सेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या वो एक दिन में तैयारी हो जाएगी? क्या आपको अपने को एक दिन में समझ पाएंगे कि आप कौन हैं? आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप लीडर हैं, कैरिस्मेटिक लीडर हैं, पार्टिसिपेटिव लीडर हैं, आपको क्या काम करना बैठ के अच्छा लगता है, आपको कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं, उन सब से जजमेंट होता है। तो आप ये प्लीज समझें कि पहले से तैयारी करके रखेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट। यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई मैं तो रिटन टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, हाँ तो आप इंटरव्यू बैच में मत आइए, आप तैयारी करना स्टार्ट मत कीजिए। I will get nervous, so I would never be able to crack an interview. Please understand, कोई भी आदमी कहीं पे भी एक अनफोर्सीन या अननोन प्लेस पे जाएगा तो थोड़ी सी नर्वसनेस होगी। मैं मूवी देखने जाता हूं तो मुझे कई बार लगता है कि क्या मेरे को ठीक सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पीछे बैठने वाला धक्का तो नहीं मारेगा। सो एवरी देयर इज एन एंजाइटी अबाउट इट, नर्वसनेस इज अ सेपरेट इशू, but are you going to be anxious? It is pretty natural, so I don't think you'll get bothered. You should get bothered by that. You should prepare to crack it and move forward. Does my attire matter? बहुत ज्यादा। I mean, imagine I'm an old guy and you're a young guy coming and talking to me. I'm not very comfortable talking to my kids. I mean, they are different generation altogether, and they talk about EDMs, they talk about Netflix, they talk about money eyes, they talk about other things. And I am not a generation. So, right, there is a mismatch, there is a gap. So, if you attire well and give me the due importance of bringing formality to the entire transaction, I would love you. I want to see that, okay, when you come in for an interview, you are prepared for it. You are taking it very seriously. I mean, and I would love you for that. I mean, in fact, I remember कुछ साल पहले, 2 साल पहले IIMs के किसी इंटरव्यू में, 12th के बाद के बच्चे इंटरव्यू में, कई बच्चे साइंस के बच्चे जीन्स पहन के गए. And obviously, the first question they were asked is, which other colleges are you applying? Are you serious about this? And they were rejected. So please understand, it is very important. I'll go with the flow and be truthful. मैं इस पे बाद में बात करूंगा। क्या हमें जीके के बारे में पूछेंगे, एकेडमिक्स के बारे में पूछेंगे, पर्सनल के बारे में पूछेंगे, सबके बारे में पूछेंगे। मेरा कर्तव्य है, इट इज माय ड्यूटी टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग प्रीटी वेल, एंड दैट्स व्हाट आई वुड डू। व्हाट आर द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इंटरव्यू बैच में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आई थिंक दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग कैप। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि इसको लेना है नहीं लेना है। I train people at various colleges also and talk about interview techniques, and I tell them that this is the first question and this is the question where you should put in the maximum effort of understanding who you are, and you should be able, I mean, I would judge you on that, right? आप अपने बारे में कितना बता पाते हैं, पास्ट बता पाते हैं, प्रेजेंट बता पाते हैं, फ्यूचर गोल्स बता पाते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम अपने बैच में जब हम क्लासेस करेंगे, जो हमारी 27 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10:30 to 12, तो इस पर बहुत फोकस करने वाले हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डिस्क्राइब योरसेल्फ, अदर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, क्या मैं अपने नाम से स्टार्ट करूं? माय नेम इज आलोक बंसल एंड आई एम डूइंग दिस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये स्टार्ट करूं या बोलूं कि नहीं, उन्हें एक्सपेक्ट करूं कि उन्हें पता है? इस बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो लोग पूछते हैं कि मैं हॉबीज के बारे में पूछते हैं, वो पूछेंगे हॉबीज के बारे में पूछेंगे नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे, जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आप कितने ट्रुथफुल हो, आपकी डेप्थ कितनी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, कल मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको बैट का वेट मालूम है? आपको विकेट्स की हाइट मालूम है? आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको ओलंपिक में जो फुटबॉल खेली जाती है उसका वेट मालूम है? यदि हाँ, तो आई वुड लव यू, आई वुड लाइक यू, बिकॉज आप जो भी करते हैं पैशनेटली, आपकी जो हॉबी है, आप उसकी डेप्थ तक भी चले जाते हो, तो काम में तो आप बहुत अच्छा करने वाले।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हम इसको और डिस्कस करेंगे। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाई एम आई वांटिंग टू। वीकनेस जानने का मतलब है हम ये समझना चाहते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम एरियाज पता है कि नहीं, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पता है कि नहीं। यदि मुझे मालूम है कि मेरे में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, तभी मैं डिसीजन बहुत अच्छी तरह ले पाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट अ ग्रेट एथलीट और आप मुझे बोल दें कि लॉन्ग जंप ले ली जाए और मैं कॉन्फिडेंटली मोटिवेटेड होकर बोलूं हाँ मैं तो कर लूंगा, यदि मुझे अपनी वीकनेस पता है कि मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो आई वुड बी एबल टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट इन अ जॉब। ओके, एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल। एंड यदि वीकनेस पता है तो देन आई वुड बी एबल टू वर्क अराउंड दैट एंड इंप्रूव दैट। If my communication skill is my weakness, would I be able to work towards improving that? Probably yes, I would do that. So it is very critical and understanding what are your strengths and weaknesses, and that's why people ask you. People ask you about your long-term goals. They would ask you about your short-term goals. They would ask you about why should we select you. Very critical. I mean, basically वो पूछ रहा है टेबल पे बैठ के कि why should I select you. बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको पूरी सेल्स पिच देने के लिए अपने बारे में, कि आप उसके दिमाग में घुस के उसके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं कि मैं आलोक बंसल को क्यों सेलेक्ट करूं, मैं एक्स वाई जी को क्यों रिजेक्ट करूं। तो यदि हमारे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, तैयारी करके जाएंगे इंटरव्यू के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस बैंक के बारे में, तो ही हम इसको क्वेश्चन को ढंग से आंसर कर पाएंगे। चाहे हम एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम एमबीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब जगह उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस बैंक के बारे में, उस रोल के बारे में जानना जरूरी है। दैट अंडरस्टैंड्स and gives a feeling to somebody that you are very seriously aligned towards doing that job. I mean, you come back and talk to me very casually, I'm not interested in talking to you. Would you like to ask us a question? इसको हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस बैच में क्यों आपको एनरोल करना चाहिए? बिकॉज चांसेस ऑफ सिलेक्शन हम आपके इंक्रीज करने वाले हैं अराउंड 95%। हम आपको बिल्कुल वी वुड गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ क्रैकिंग दैट इंटरव्यूज, वी वुड गिव यू प्रैक्टिस, we would give you actually some material on talking about what kind of questions people would ask you and help you traverse that path of building up the right suitable answers for yourself. So that is very critical and it is important for you to understand that. We would also help you turn your weaknesses into strengths. For an example, my weakness is about my general awareness. In fact, I know of some people who would always ask you about your city. I mean, they would come from a different city and come back and talk to you in Delhi and say, or maybe in Bihar or somewhere else, and they would ask you questions about, do you know how many rivers flow through Delhi? Or do you know what is the most important employment option for people in your city? And if you are not able to answer that, you are gone. So guys, we would also help you turn your weaknesses into strengths when we prepare you for a personal interview, and that's going to be important. And the advantage of learning from an experienced personal coach, obviously me, is definitely there. I have been a vice president with ICICI Bank, Lombard. I have studied at premium institution in the country. I'm an engineer by profession, but an MBA, and I have also done a course from Harvard Business School. I have been training people like you on various forums on preparing for an interview. So I think it is time to get on board and look at that. Please also understand this is going to be a top rated course. This is very, I mean, जब प्राइस रख रहे थे, जब बात कर रहे थे प्राइस की, तो मैंने बोला ये तो बिल्कुल जायज नहीं है इतने कम प्राइस पे इसको ऑफर करना। बट दे सेड दैट दे वुड, अड्डा 24/7 ने बोला कि दे वांट टू ensure that a large number of students are benefited out of that, and that's why it is an ideal course for freshers or repeaters also. So if you are preparing for SBI PO, IBPS PO, RBI Grade B, Civil Services, EPFO, SEBI Grade A, Navbar, FCI, MBA entrance examinations, campus recruitment training also, or a job interview, this is the course for you guys. Inaugural offer available है. If you have downloaded Adda 24/7 का app अपने मोबाइल पे, तो you are aware that you get an extra 5% discount और a waiver. अभी इस कोर्स पे आज 2799 पे भी 25% वेवर अवेलेबल है। बैच डिटेल्स जानने के लिए ये आपके पास लिंक आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो you would be able to go to a particular level, जिस पे आप जाके इस पे आप खरीद सकते हैं, डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ओके, एंड ये आपके पास अवेलेबल है, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
इसके ऊपर जाके आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली आप खरीद पाएंगे। आप ट्राई करें, इमीडिएटली खरीदें। आज आपको इसके ऊपर 30% का वेवर अवेलेबल है। 25% यदि आप वेब पे खरीदते हैं, पेटीएम से खरीद सकते हैं, बाकी एप्स पे आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। 25% अवेलेबल है यदि वेब पे खरीदते हैं, और एडिशनल 5% आपको अवेलेबल है यदि आप इसको मोबाइल मोबाइल ऐप पे अड्डा 24/7 ऐप से खरीदते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, यदि आप इसको खरीदने के लिए क्लिक करते हैं और आप इसको एक कूपन कोड सक्सेस डालते हैं, ओनली देन यू वुड बी एबल टू गेट दैट वेवर। सो आई थिंक इट इज अ राइट टाइम गाइस टू गो फॉरवर्ड एंड बुक दैट, बिकॉज हमारे पास बहुत कम सीट्स अवेलेबल होंगी। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको ट्रेन करें, अच्छी तरह आपको बताएं, so that you would be able to do a great job. So guys, all the best. Thank you very much. Look forward to seeing you in my batch, which is a selection batch for personal interview, which we are starting on 27th April. The timings would be 10:30 to 12. We would have a 9-hour module covering all the important topics which we talk about. And please also come back and maybe spread that word with your friends and let them benefit out of this. और हम किसी भी हालत में इस प्रिपरेशन को डिले नहीं करने वाले, बिकॉज हमें मालूम है कि इंटरव्यू भी हम लेवल तक पहुंचेंगे और इंटरव्यू क्रैक करेंगे। सो गाइज, ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड कम बैक एंड ज्वाइन दिस। तो आज ही ज्वाइन करेंगे एंड कम बैक एंड टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मी। माय नेम इज आलोक बंसल। थैंक यू।